Hello everyone. So today we'll discuss about internal medicine as a branch, pros and cons. So since it is my branch, so we'll start with pros. The first pro is that it is a evergreen branch. तो हम सबको अपने लाइफ टाइम में अभी तक कितनी बार एक इंटरनल मेडिसिन फिजिशियन की जरूरत पड़ी होगी और अब सुपर स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ी होगी फॉर आवरसेल्व्स और फॉर आवर फैमिली। ओके, सो डेफिनेटली स्कोप तो कभी खत्म नहीं हुआ। इट इज एवरग्रीन ब्रांच। आज से 100 साल 500 साल पहले भी इसका स्कोप था और आज से 100 साल 500 साल बाद भी इसका स्कोप रहेगा। सो इट इज डेफिनेटली एवरग्रीन ब्रांच। कितना भी सेचुरेशन आ जाए इसका स्कोप खत्म नहीं होगा। We will definitely get a lot of patients after doing this internal medicine. Other than that, it is a very thrilling and satisfying branch. You get an immense satisfaction of saving a life. Suppose आप emergency में हो and the patient came in cardiac arrest. You assess the rhythm and you found that the rhythm is ventricular fibrillation. So you defibrillate the patient and the patient literally come back to life immediately. So आपके सामने सामने patient cardiac arrest में आएगा, attendants would be feeling कि patient has gone. बट आपने रिदम असेस करके यू डिफिब्रिलेटेड द पेशेंट एंड सडनली यू सी कि डिफिब्रिलेट करते ही पेशेंट स्टार्टेड ब्रीदिंग, पेशेंट खुद से बैठ जाएगा। ओके, देयर इज लिटरली इमेंस सेटिस्फेक्शन ऑफ सेविंग अ लाइफ इमीडिएटली। ऑल्सो इट इज अ वेरी थ्रिलिंग ब्रांच। अगर किसी को मिस्ट्री सॉल्व करने का बहुत शौक है, बचपन में पजल्स सॉल्व करने का बहुत शौक था, तो इट इज डेफिनेटली अ ब्रांच फॉर देम। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि पेशेंट हमारे पास वार्ड में 10 to 15 days पड़ा रहता है। We just work up the patient and finally reach a particular diagnosis. So patient multisystemic diseases, multisystemic involvement के साथ आता है and we have to reach to a particular diagnosis. Okay, so it is very thrilling. Suppose एक बार मेरे पास patient आया था, patient came in emergency with abdominal and chest pain. ECG में there were ST elevations, although not so convincing of MI, but since the patient was having chest pain and two criteria were fulfilling, so we gave the benefit of doubt. We thrombolized the patient. But post that, when the blood investigations came, what we saw was the patient was having hypercalcemia with calcium of 13. The patient was having hyperkalemia, potassium of 6, and KFT was also derived with a creatinine of 6. Okay, so post that, we worked up the patient for hypercalcemia and we found out that the patient was having hyperparathyroidism because of parathyroid adenoma. And all this hypercalcemia and hyperkalemia were causing the ST elevation, and hypercalcemia was causing abdominal pain and slight chest pain as well. Okay? So we misdiagnosed the patient as STEMI. Finally, the diagnosis came out to be a parathyroid adenoma, and patient improved after treating. Okay, so it is literally like solving a puzzle or solving a mystery. Other than that, सोसाइटी की नज़र से आप देखें तो जनरल मेडिसिन वाला इज द रियल डॉक्टर। उनको ऐसा लगता है कि अगर आप स्टेथ लेके नहीं बैठे हो, आपको सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं है, बिकॉज पीपल थिंक कि हाँ, पहले से यही सोच है कि डॉक्टर वो है जिसको सब चीज़ की नॉलेज है। सो सोसाइटी की नज़र में द रियल डॉक्टर इज द जनरल मेडिसिन वाला। अदर देन दैट, आपको भी खुद से नॉलेज होगी ऑफ ऑल द सिस्टम्स। यू वुड नॉट से टू अ पेशेंट कि, या कोई भी आपका रिलेटिव भी आपसे पूछता है आप पर्टिकुलर सिस्टम, तो आप ये नहीं कहोगे कि हाँ दिस इज नॉट माई एरिया, बिकॉज जनरल मेडिसिन फिजिशियन लुक्स at each and every part of the body. Okay? Then opening a setup is definitely not costly. You just need a stethoscope, a pulse oximeter, a blood pressure machine, and a table and a chair. And you can definitely start a setup. Okay? Post that, you can just add on some extra machines, but you just need these little things to start a setup. And a lot of new researches and new drugs, everything is coming up. So you just keep on learning more and more. As let us take example, when I entered my PG, there was no treatment for hepatitis C. But when I completed my PG, hepatitis C is completely treatable now. So we have these drugs called directly acting antivirals. Patient take these drugs for 3 months and it is completely treatable.
Now let us discuss about the cons. So one thing is कि super specialty करना necessary हो गया है if you want to settle in metro. Because metros में क्या होता है कि people go for a super specialty doctor even for small diseases. Like किसी को diabetes है तो they won't go to a general medicine physician, they will go to a endocrinologist. अगर किसी को डेंगू भी है तो they will try to go to a infectious disease person than a general medicine physician. So metros में it is getting a slightly difficult. So if you want to settle in a metro city, तो आपको super specialty करना is somewhat necessary. Other than that, इवन आप सेकेंड टायर सिटीज में भी जाओगे तो आपका क्वैक से काफी कंपटीशन होगा क्योंकि बीएमएस बीएचएमएस या क्वैक्स ये सब लोग भी सेम पर्टिकुलर पेशेंट सेट ऑफ पेशेंट देख रहे हैं जो एक जनरल मेडिसिन फिजिशियन देख। सो उनसे आपका काफी कंपटीशन होगा, वो लोग काफी कम कॉस्ट पे काफी कम फीस पे पेशेंट देखेंगे। तो पीपल पहले उनके पास जाना प्रेफर करेंगे देन कमिंग टू यू। ओके, देन इट इज डेफिनेटली अ हेक्टिक ब्रांच। जब आप पीजी करोगे तब भी बहुत ज्यादा हेक्टिक है, एंड पोस्ट एट बी it is somewhat hectic. Okay, and there is a lot of things to study, but cons are not that much as compared to the pros. And if you have a interest in a particular branch, if you have interest in a medicine, then definitely go for it. Okay, all the best.